Hello everyone. Today we are again with you with another episode of Meri Daastan, episode number 3. And today we are having two beautiful ladies with us, and they are the author of the book, poetry book. And let's talk to them and let's know कि वो क्या कहती हैं अपनी इस राइटिंग जर्नी के बारे में, पोइट्री जॉनरा के बारे में और पाकिस्तान में इसके क्या ट्रेंड्स हैं और ग्लोबली पोइट्री जॉनरा को किस तरह से देखा जाता है एंड हाउ this genre is incorporating in like literature industry as well and दास्तान के बारे में उनके क्या ख्याल आते हैं हम सब मजे मजे की बातें आज उनके साथ करेंगे so I'm starting with you Noor. Please introduce yourself. Assalamu alaikum everyone. I'm Shah Noor and I'm writer of the book Within Words. Or I'm a student of Bachelor's in English and that's all for my introduction. All right, thank you for joining us today Noor, and what about you Fatima? Well, hi, Assalamu alaikum. I'm Fatima. I'm a poetess and a fiction writer and a graphic designer. I've been working as a creative head for a self-publishing firm since 2020, and well, that's it about me. All right. Okay, so we want to know about your writing journey and the publishing journey. So first, we will ask you, Noor. So for my writing journey, मुझे कोई around 7 साल पहले या अब तो 8 साल हो गए I guess कि मेरा interest develop हुआ writing के अंदर. First I used to write short stories and then slowly and gradually it became a love for poetry and essays. और जो है publishing journey, my publishing journey has been like a roller coaster ride. It has been fun filled and a lot of like anxieties at different time. लेकिन ये है कि it was a very good journey. I had like a great experience with my team and with like bringing my dream to life. It was a beautiful experience. Sometimes there were times when I was like very disheartened in certain things and I wanted to give up because it took like a really long time and it went long for like a year I guess. But it ended very well, so I'm really happy. So that's great. वो कहते हैं ना जब end अच्छा तो सब अच्छा. Exactly. So so that's a good thing to know. Okay, what about you, Fatma? Tell us about your writing and publishing journey. My writing publishing, my writing journey started when the pandemic came. इसी टाइम पे मैंने लिखना शुरू किया. इससे पहले मुझे पढ़ने का बहुत शौक था. मैं लिखती इतना कुछ खास नहीं थी. लेकिन पेंडेमिक में बहुत टाइम था तो तब मैंने लिखना शुरू किया. And as for publishing journey, that's second one. That's when I started my modern writing one last August. Name is changed to All right. And what was the so exact time when you realized that you should be a writer, or you realized that you should publish your book? For me uh, it was आवाज uh, it's okay. For me, it was when I always used to write and I always dream कि हाँ ये मुझे एक published writer बना हमेशा से ख्वाब था but कभी भी ना confidence नहीं था. I was always afraid that शायद लोग मेरे काम को accept नहीं करेंगे उसको पसंद नहीं करेंगे. And then when I made this collection of all my poetry and I shared it with my friends, so I was like, yeah, I'm thinking of publishing it and stuff. And she was like, your words, she said, I remember her was that your words make me want to do better. They make me want to be better. They inspire me to do better. And another friend said the same thing to me. So after I heard them, I was like, yeah, I have to do this. Because like, as long as कोई एक इंसान भी से किसी भी तरह से मुतासर हो सकता है ना वो मुझे लगेगा कि वही मेरी सक्सेस है. So yeah, it was like that's exact thing that like हाँ बस करना है. All right. So, do you think there is any difference life before as a published writer or life after being a published writer? There are a lot actually. जब हम लोग पहले देखते थे इस पूरी फील्ड को इस इंडस्ट्री को आई वुड से तो हम ये कहते थे हमारे मतलब बहुत क्वेश्चंस होते थे काफी फियर्स होते थे काफी चीजें होती थी जो हमें कहते हैं ये किस तरह से होगा वो किस तरह से होगा. एंड आई रियलाइज कि स्टैंडिंग ऑन द सर्फेस मुझे कुछ पता नहीं चल सकता. इफ आई वांट टू नो अबाउट इट आई हैव टू गो इन डेप्थ. तो वो डेप्थ में जाने के लिए ऑब्वियसली मुझे बुक ही वो चीज थी लिखना पब्लिश करना ही वो चीज थी जो मुझे लेके जा सकती थी.
सो आफ्टर मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरे पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आई हैं थ्रू दास्तान। एक्चुअली अ लॉट ऑफ इट वाज थ्रू दास्तान। उन्होंने अपने डायरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं, उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज देते होते हैं। सो उसके थ्रू बहुत ज़्यादा आई है। एंड यू नो दैट आफ्टर आई ब्रॉट इट माई वर्क इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, पहले तो सिर्फ मेरी फ्रेंड्स और फैमिली के सामने होता था, अब सबके सामने है, सबका प्रेज भी मिलता है, क्रिटिसिज्म भी मिलता है, बट प्रेज यू नो काइंड ऑफ मेक्स यू वांट टू डू इवन बेटर, एंड इवन क्रिटिसिज्म वांट्स टू मेक यू डू बेटर। सो अल्हम्दुलिल्लाह पुराने काम से सीखा है और इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह गेट That's बेटर। so एग्जैक्टली हाँ, अगर काम उनको क्रिटिसाइज ना किया तो आई हाँ, गेस हम लोग पहले से बेहतर उसमें कुछ भी करने की कोशिश ना करें। सो क्रिटिसिज्म इज एग्जैक्टली, ऑलवेज द बेस्ट थिंग या जो एक राइटर रिसीव करता है। अबाउट यू फातिमा, वन इंस्पायरेशनल और किक स्टार्ट मोमेंट जब आपको रियलाइज हुआ कि यू वांटेड टू बी अ पब्लिश राइटर। एक्चुअली इट वाज ड्रीम। जब मैं छोटी थी तब लिबर्टी बुक जाती थी, तो आई ऑलवेज वांटेड टू सी माय बुक डिस्प्लेड देयर ना, एक बुक हो जिसपे मेरा नाम लिखा हुआ और मैं जाऊँ और अपने पेरेंट्स को लेके जाऊँ, दिखाऊँ कि देखें ये मेरी बुक है। तो एक ये छोटा सा ड्रीम। तो जब मैंने शुरू किया, मेरे मन में बस यही था, मैंने एक बुक पब्लिश करनी है कि मैं उसको बुक स्टोर्स में देख सकूँ, कि वो अवेलेबल हो, मेरा नाम लिखा हुआ। दैट वाज यू नो अ लिटिल टीनेजर ड्रीम। तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की एंड पब्लिशिंग पे जब आई तो बहुत डरी हुई थी, बिकॉज फर्स्ट टाइम हुई थी, कुछ आइडिया नहीं था। तो दैट वाज अ हॉरिफाइंग थिंग। लेकिन जब उमर से बात हुई, द दास्तान सीईओ, ही वाज सो फ्रेंडली, बहुत इजी कर दिया था उन्होंने सब कुछ। दास्तान ने वाकई में बहुत हेल्प की सब में। इतना जो डर और फेयर सब कुछ था, वो सब कुछ कम हो गया। राइटिंग में बहुत फिर मजा आया अगर जब सब कुछ इजी पता चला गया। दैट्स व्हाट आई डिड। So, do you also feel that there is a difference between life as a published author before and after? Yes, it Do you is. think people are appreciating and accepting young talent as a good, uh, you know, prayer for the country that यहाँ के हमारे young people आ रहे हैं and people are accepting and appreciating it? तो आपको लगता है कि there is a difference between अगर uh, बाहर के लोगों की अभी तक नहीं मिला, आई डोंट नो व्हाई, क्रिटिसिज्म अभी तक नहीं मिला। सबने बहुत प्रेज ही किया है। सो काफ़ी डिफरेंट है लाइफ बिफोर पब्लिशिंग और आफ्टर पब्लिशिंग, ऑब्वियसली इट इज। ऑलराइट। ओके फातिमा, आप एक राइटर के लिए हमेशा से इंस्पायरेशन और के साथ साथ इंफॉर्मेशन गैदर करना, किसी चीज़ को लिखने के लिए उसके लिए आइडिया चाहिए होना, एक ये स्टोरी के लिए एक हमेशा से सेट पैटर्न रहता है कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं से मतलब इंफॉर्मेशन ली है, आपको कोई आइडिया क्लिक किया एंड यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। बट एज अ पोइट, डू यू थिंक एक पोइट की जर्नी डिफरेंट होती है? कि मतलब एक पोइट जो है वो इंफॉर्मेशन या आइडिया किस तरह से जनरेट करता है अपने किसी भी टॉपिक के लिए? दोनों चीज़ों, लेकिन पोएट की रिसर्च वर्क थोड़ा डिफरेंट होता है एज राइटिंग अ नॉवल। बिकॉज नॉवल के लिए आप आइडिया ऑन इंटरनेट वगैरह रिसर्च करते हो, पोएट एक्सपीरियंसेस से लिखते हैं, ऑब्जर्वेशन से लिखते हैं, कोई भी इमोशन को ऑब्जर्व करके या कोई इमोशन खुद एक्सपीरियंस करके उस फीलिंग को वर्ड्स देके पोएट अपनी पोएम्स लिखते हैं। तो रिसर्च होती है लेकिन थोड़ी डिफरेंट होती है। और मैंने अपनी बुक के लिए जो की काइंड ऑफ रिसर्च, जिसको आप कह सकते हैं या आइडिया कह सकते हैं, दैट वाज बेसिकली बाय ऑब्जर्विंग एंड लिसनिंग टू द एक्सपीरियंसेस माय फ्रेंड्स एंड इवन आई हैड एक्सपीरियंसेस। उन सबको मिला के उन सब पे लिखा है मैंने। दैट्स व्हाट इज। एंड व्हाट अबाउट यू नूर? आई एग्री विद फातिमा कि जब आप एक नॉवल पे काम कर रहे हो तो या आप कुछ यू नो नोवेलास पे या शॉर्ट स्टोरीज पे, तब आपको रिसर्च करनी पड़ती है, आपको देखना पड़ता है कि यू नो स्पेशली जब आप फिक्शन पे भी काम कर रहे हो तो इवन देन यू हैव टू रिसर्च अ लॉट ऑफ थिंग्स कि आपकी स्टोरी में कहाँ पे चीज सही कर रही है कि सही नहीं कर रही है। बट when in poetry it's like completely different, because for me personally I've never researched anything unless it was for the publishing process. मेरा जो भी इंस्पिरेशन रही है वो हमेशा अपनी दुनिया से, जो हमारे इर्द गिर्द की दुनिया है उससे रही है, मतलब अपने इर्द गिर्द के लोगों से रही है जिन लोगों को शायद मैं नहीं जानती। इवन स्ट्रेंजर्स हैव बीन लाइक अ ग्रेट सोर्स
of my work, उन्होंने मुझे बहुत inspire किया, everyday life events, that has been my inspiration so far. So that's kind of a poet research, observing other people. Yeah. Exactly. That's so true. That's so true. Okay, अच्छा ये भी कहा जाता है कि being a poet is a luxury. Like एक just idea आपके mind में आया and you start pouring on down on your on the pages. Like I am also a poet. So, I'm a Urdu शायर. So लेकिन people usually used to say me before my book got published के जो मैंने नॉवल लिखा उससे पहले मुझसे लोग जब मैं उर्दू में शायरी करती थी तो लोग यही कहते थे कि इट्स जस्ट अ थिंग यू गॉट गिफ्टेड एंड यू आर Yeah. नॉट पुटिंग मच एफर्ट इन दैट सो व्हाट डू यू थिंक दैट कि एक क्या वाकई एक पोइट और एक दूसरे राइटर दूसरे जॉनर्स के राइटर में एक लग्जरी का एलिमेंट है कि वो बस उनको आमद हो रही है दे आर राइटिंग एंड एक दूसरी जॉनर के राइटर के लिए इट्स मोर टफ एंड डिफिकल्ट व्हाट डू यू थिंक गाइस For me, I would say there is like a certain part जिसमें हम कह लेंगे कि हाँ they do have that luxury. But I think कि वो भी ना पोइट्री के आइडिया पे डिपेंड करता है, बट उसको रिदम देना, जैसे कि उर्दू की आपने कहा, आप राइटर है, उर्दू इज वेरी हार्ड, उसकी पोइट्री इज वेरी हार्ड, जिसमें आपको हम काफिया का और उन चीजों का बहुत ख्याल करना पड़ता है, आपको रिदम पे बहुत फोकस देना पड़ता है. सो आई से कि आई नो कि नॉर्मल राइटर्स जो, सॉरी नॉर्मल दूसरे राइटर्स होते हैं, उनको रिसर्च करनी पड़ती है, उनको ज्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ती है. बट आई थिंक कि इवन जो पोइट्स होते हैं उनकी छोटी छोटी उनमें भी ना बहुत ज्यादा उनको जो रिदम में और इन सब में, और स्पेशली जो गजल होती है उसमें भी आपको हर चीज को डिफर करना होता है, और सो आई थिंक है वो भी मुश्किल है, लेकिन ये है कि पीपल जस्ट थिंक दैट इट्स इजियर. What are your thoughts, Noor, about this thing? Do you think that being a poet is a luxury and something God gifted, and you are not putting so much effort in? For Well, me, it's I not would. it's God gifted. Okay, sorry, no, I'm cutting you off. आप बोलें. It's okay. Well, for me personally, I would say that it is God gifted, Alhamdulillah. But I would say that I think it's mostly in the free verse poetry. I think it comes with that. But if we look into like more elaborate forms of poetry, then I would say it's a little, you do have to put in a lot of more effort. But yeah, the God gifted point, I do agree with that. I agree with that in all forms of writing, because I think everything, like the writers, the ideas, and like the way they look at things, their perspectives and everything, that really stands out from normal people. Exactly. And what's your thoughts, Fatima? कि आपको क्या लगता है इसके बारे में? Uh, I don't agree here with no. मतलब God gifted नहीं है in a sense that you have to really work hard. Sometimes you write poetry and the emotion आप deliver करना चाह रहे होते हो वो बिल्कुल नहीं आ रहा होता. So it's like you don't know, totally a mess. जो आप message convey करना चाह रहे होते हो वो आपकी poem, आपकी prose में कहीं भी नहीं दिख रहा होता. So you have to work hard on delivering your emotion, your message clearly. So इस sense में God gifted नहीं है, but writing is a talent. So obviously that's God gifted. Writing talent is obviously something God gifted. But it's not like luxury नहीं है. हर writer struggle करता है अपने genre में, जो भी लिखेगा उसके लिए वो एक उसका art है, उसमें मेहनत करनी है उसमें, भले वो poetry हो या फिर कोई भी fiction genre. I think they Exactly. all have their own struggles. हर किसी की ना Yes. अलग अलग struggle होती है. Exactly. And people usually don't understand that कि एक Yeah. poet कितने emotions से गुजर के कुछ लिखता है, कुछ एक piece को I तैयार think, करता है. yeah, because poetry में आपको एक बड़ी बात कम अल्फाज में करनी होती है, so I think वो Exactly. भी थोड़ा मुश्किल काम होता है. और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि रेपिटेशन ना हो रही हो ताकि ये ना लगे कि आपने किसी का काम जो है वो छाप लिया. बहुत Exactly. कुछ वाकई एक पोइट आप लोगों को बहुत कुछ ख्याल में रखना पड़ता है. अच्छा पोइट्री तो एक तरफ होगी लेकिन आपको क्या लगता है पाकिस्तान में इंग्लिश पोइट्स को किस तरह से देखा जाता है? डू यू थिंक दैट देयर इज appreciation scope and appreciation level as for English poets, writers in Pakistan? I'd say कि अब जाके बढ़ रहा है इंटरेस्ट, बिकॉज पहले जो आई थिंक ये थोड़ा सा इसमें जनरेशन गैप भी आ जाता है, बिकॉज पीपल ऑफ माई जनरेशन दे यूजली प्रेफर इंग्लिश पोइट्री, बिकॉज उनको उनको आजकल लगता है कि यार उर्दू थोड़ी मुश्किल है, जबकि मुझे ऐसा नहीं लगता. बट ये है कि दे थिंक दैट नहीं, इंग्लिश इज ईजियर टू अंडरस्टैंड फॉर देम एंड स्टफ.
और लेकिन जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनको अपनी जुबान की ना कदर होती है। आई वुड से हमारी जनरेशन जरा सी उस चीज को खो देती है, लेकिन जो बड़ी एज के लोग होते हैं दे नो कि अपनी उनकी जुबान की क्या अहमियत है, उसकी क्या खूबसूरती है। तो दे ऑलवेज प्रेफर कि वो उसी को कंटिन्यू करें और वो उसको ही पढ़ें और अपने राइटर्स को सपोर्ट करें। हम लोग क्योंकि इधर आसानी की तरफ जाते हैं कि यार जो चीज़ हमसे कनेक्ट हो जाए, इजीली कनेक्ट हो जाए, तो इसलिए हम लोग इंग्लिश पोइट्री को प्रेफर करते हैं। बट नाउ बिकॉज आई थिंक कि अब बिकॉज ऑफ लाइक द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, जब से दास्तान है, राइटर टॉक्स एंड अदर पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स, ये इंग्लिश भी काफी ग्रो हो रही है। इवन पीपल लाइक ऑफ ओल्ड एज आर लाइक कंसिडरिंग इट, और इवन पीपल ऑफ यंग एज आर कंसिडरिंग उर्दू नाउ। आई थिंक वो जो गैप है वो खत्म हो गया इंग्लिश उर्दू का, एंड लाइक दे जस्ट अप्रिशिएटिंग आर्ट नाउ without the language barrier. एंड व्हाट डू यू थिंक फातिमा, क्या आपको लगता है कि वाकई वी आर इन अप्रिशिएटिंग फेज के, हाँ लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दोनों एक आर्ट की चीजें हैं और दोनों की अपनी वर्थ है, और देयर यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है व्हेन इट कम्स टू द फिर लैंग्वेज? मैंने कहा कि अब इसकी तरफ सब आ रहे हैं, पोइट्री की तरफ अब सब पहले आ रहे हैं। सब पहले यूजुअली उर्दू पोइट्री का बहुत ज़्यादा वो था, लेकिन वही बात आ गई कि उर्दू थोड़ी मुश्किल लगती है। पर्सनली मुझे भी उर्दू बहुत मुश्किल लगती है। तो लेकिन मैं फिर भी पोइट्री उर्दू ही प्रेफर करती हूँ। लिखती नहीं हूँ उर्दू पोइट्री, लेकिन पढ़ना मुझे उर्दू पोइट्री ही पसंद है, क्योंकि उर्दू में बात ज़्यादा अच्छे से आती है। तो इसलिए, लेकिन अब ये है कि यंग्स और जो बुजुर्ग हैं वो सब इंग्लिश उर्दू दोनों पोइट्रीज को प्रेफर कर रहे हैं। और इंग्लिश पोइट्री अब ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने नोट किया है कि पहले जैसे बहुत हार्ड इंग्लिश बहुत टिपिकल वोकेबलरी जाती थी, अब बहुत सिंपल होती जा रही है। लाइक सिंपल वर्ड्स बात कहते हैं तो दैट्स रिलेटेबल। तो इसलिए सब बहुत प्रेफर, अब वो चीज़ नहीं रही है जो पहले लैंग्वेज बैरियर था और एक्सेप्ट नहीं थे करते थे, अब नहीं है, अब कम होता जा रहा ऑलराइट, और आई गेस यही एक ग्लोबल ट्रेंड भी है अब के लोग जो है वो हार्ड वोकेबलरी और फैंसी वर्ड्स को छोड़ के जो है वो सिंपल लैंग्वेज सिंपल वर्ड के थ्रू जो है वो अपना मैसेज डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको आपको लगता है कि पोइट्री के इस जॉनरा में कोई ग्लोबल ट्रेंड्स हैं जिनको फॉलो किया जा रहा है या किया जाता था, जिनको नहीं करना चाहिए था? आई वुड से कि जिस तरह से ट्रेंड पहले आपको पता है कि यही था कि कितना ज्यादा मुश्किल इंग्लिश को समझा जाता था, और क्या कहते हैं अब जाके जबकि ये आसान हो गई है और बहुत ग्लोबली हो चुकी है, पीपल एक्सेप्टिंग इट, still there are a lot of people that do not consider the free verse poetry. They say कि यार ये तो quotes हैं, या this is not poetry, ये तो सिर्फ दो लाइनें लिखी हुई हैं। There's still people out there that think that. So I think कि वो ट्रेंड अभी तक, या कहने ट्रांजिशन है, से एक्सेप्ट नहीं हुई है उस तरह से उसको होना चाहिए था। People still go back to the old ones, they think कि नहीं वही पोइट्री है। But I think कि इतना like the transition of artistic eras as well, कि वो जो पुराने जमाने में राइटिंग थी, ऑब्वियसली बात है कि जब हम लोग मॉडर्निज्म से पोस्ट मॉडर्निज्म की तरफ एग्जाम्पल आए हैं, थिंग्स विल चेंज एंड आर्ट विल टेक अ ट्रांजिशन। बट आई थिंक वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट, और आई थिंक इस वजह से ना वो थोड़ी रिस्ट्रिक्ट भी हो रही है। अगर हम उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट करें तो उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस है ना वो हट जाएंगी, और हमारे राइटर्स भी मतलब उसकी तरफ फिर ज्यादा आएंगे, दे विल फील मोर कॉन्फिडेंट इन देयर वर्क। बिकॉज फॉर मी it was a big struggle to get people to recognize that work, to people to accept that work कि हाँ ये चीज भी अब आ चुकी है, this is also poetry and this is not quotes. So yeah, it's like it needs a lot more acceptance of this transition or trend, I'll say. So है। एग्जैक्ट what do you think, Fatma? एग्जैक्टली एज नूर सेड, ये ट्रांजिशन बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं हुई। सब लोग इसको एज अ कोर्ट ही कंसिडर करते हैं कि ये पोइट्री नहीं, ये कोर्ट ही है। तो आई मीन सबको एक वो पुरानी पोइट्री जिसमें वर्ड्स राइम कर रहे हों और बहुत हार्ड वर्ड्स हो, इस तरह की पोइट्री ही पोइट्री लगती है। जबकि इजी वर्ड्स और जो राइम भी ना कर रहे हैं, दो तीन लाइंस की ही क्यों ना पोएम हो, वो भी पोइट्री होती है। अभी तक ये इस चीज़ पे इतनी एक्सेप्टेंस हुई नहीं है। जबकि मैंने नोट करा है कि जो लोकल यंग राइटर्स हैं वो ज़्यादातर इसी फॉर्म में लिखते हैं, फ्री पोइट्री ही लिखते हैं, फ्री पोएम्स ही होती हैं और इतनी अच्छी होती हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि ये पोइट्री कंसिडर नहीं की जाती। ऑल राइट, सो मूविंग फॉरवर्ड के हमें काफ़ी कुछ समझ आ गया कि हम लोगों ने अपने ऑडियंस से काफ़ी कुछ शेयर भी कर लिया कि बीइंग अ पोइट और बीइंग अ लग्जरी वन के में क्या डिफरेंस है।
और जो पोइट्री के ट्रेंड्स हैं, ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, या पोइट्स को किस नज़र से देखा जाता है। अब इसके साथ लेट्स टॉक अबाउट कि हमारी इतने जो हमारे लोकल राइटर्स हैं, डजेंट मैटर कि वो किस जॉनरा से बिलोंग करते हैं, वो किस जॉनरा पे काम करते हैं, या वो बुक्स किस जॉनरा पे आ रही हैं। हमारे लोकल राइटरों का आपको लगता है कि पाकिस्तान में इतना स्कोप है, लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं और मतलब उनके बारे में अवेयर हैं, एज कम्पेयर टू व्हाट आई फेल्ट दैट एज कम्पेयर टू फॉरेन। हमारे यहाँ लोग जो हैं वो फॉरेन राइटर्स को ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, वो Hmm. उनके बारे में ज़्यादा जानते हैं, जबकि हमारे यहाँ का रॉ टैलेंट जो है वो उसका इतना अवेयरनेस नहीं है, और जो पब्लिश राइटर्स हैं उनको भी अपनी जगह बनाने में काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। डू यू थिंक कि इसके पीछे क्या वजूहात हैं और हम इन चीज़ों को किस तरह से टैकल कर सकते हैं? वेल आई बिलीव कि पाकिस्तान में टू गेट योर वर्क जो हमारे ट्रेडिशनल पब्लिशर्स होते हैं उनसे अपने काम को रिकग्नाइज करवाना, उनका अपने काम को प्रूव करवाना इज़ अ वेरी हार्ड थिंग। स्पेशली जो हमारे इंग्लिश राइटर्स होते हैं उनकी तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज आई नोटिस दैट अ लॉट ऑफ ट्रेडिशनल पब्लिशर्स दे प्रेफर उर्दू राइटर्स। और दूसरी की चीज़ एंड देन व्हेन अ लॉट ऑफ राइटर्स है गो थ्रू, बिकॉज हम लोगों को काफ़ी होल्ड चाहिए होता है अपने काम पे, दैट सेल्फ पब्लिशिंग गिव्स अस। जब हम सेल्फ पब्लिशिंग की तरफ जाते हैं तो देयर लाइक यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ मनी, एंड अ लॉट ऑफ यंग राइटर्स अपने काम को पब्लिश करवाने में पैसे लगते हैं, अब उसकी पब्लिसिटी करवाने में काफ़ी पैसे लगते हैं। सो उसमें जो पैसों की रिस्ट्रिक्शन आ जाती है ना, दैट इज ह्यूज as compared to international writers. You know that there's, for example, Penguin. The Penguin books have like a huge reach. वो और जितने आपने देखा होगा लिबर्टी बुक्स पे भी फॉर एग्जांपल, और लाइक मेजॉरिटी ऑफ द बुक स्टोर्स दे प्रेफर इंटरनेशनल राइटर्स। और वो जो पाकिस्तानी या लोकल राइटर्स के बहुत छोटा सा साइड पे शेल्फ होता है, बिकॉज हम लोग खुद भी आई थिंक उनकी कदर नहीं करते हैं, बिकॉज घर की मुर्गी दाल बराबर। इट्स समथिंग लाइक दैट फॉर आवर राइटर्स आई बिलीव, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं वो बाहर के लोग हैं ना, देयर वर्क इज गोना बी बेटर। हम अपने काम को खुद इमेच्योर समझते हैं, उसकी खुद वर्थ, उसकी कोई वर्थ नहीं समझते हैं। एंड आई थिंक दैट अगेन दैट सेल्फ पब्लिशिंग थिंग, बिकॉज हमारे पास वो उसको पब्लिसिटी के इतनी अमाउंट नहीं होती है, तो हमारे राइट्स बेचारे पे काफी पीछे रह जाते हैं। एग्जैक्टली। ओके, व्हाट डू यू थिंक फातिमा, आपको क्या लगता है कि आप लोगों के साथ एग्री करती हैं या नहीं? बिल्कुल एग्री करती हैं। हमारे पास मार्केटिंग और एक्सपोज़र देने के मीन्स बहुत कम हैं, और जो यंग राइटर्स हैं, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, उनको तो ट्रेडिशनल पब्लिशर्स कंसिडर ही नहीं करते। मतलब उन पे इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते। भले उनकी मैन्युस्क्रिप्ट कितनी ही अच्छी हो, कोई भी जॉनरा हो, वो कंसिडर नहीं करते। इवन मेरे साथ भी हुआ था कि मैंने जब पोइट्री जब एक ट्रेडिशनल पब्लिशर जैसा कि हम पोइट्री कंसिडर नहीं करते, मैंने कहा ओके। लेकिन कुछ टाइम बाद एक तो होगा उन्हीं फर्म से एक पोइट्री बुक पब्लिश हुई थी, एंड आई वाज लाइक कि आप पोइट्री जनरल कंसिडर ही नहीं करते थे। तो खैर आई थिंक आई वोंट टेक नेम, काफ़ी बड़ी पब्लिशिंग हाउस है वो पाकिस्तान का। लेकिन खैर बात है कि अब हम सेल्फ पब्लिशिंग करते हैं, आप इतने पैसे लगाते हैं हम खुद पे, लेकिन मार्केटिंग पे आके मार्केटिंग बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है। अब जैसे अब मैं हूँ, आई डोंट वर्क फ्रीलांसर, तो अब मेरी अपनी सेविंग्स होती हैं, उसमें मैं या तो बुक पब्लिश करवा लूँ या फिर मैं मार्केटिंग अफोर्ड कर, आई अफोर्ड एवरीथिंग। तो इसी चक्कर में रह जाता है, हमारी कोई प्रॉपर एक्सपोजर होता नहीं है। तो बस इसी हमारे जो लोकल वो हमें इतना जान, और ना हमें इतना प्रेफर करते हैं, वो फॉरेन राइटर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो स्पेशली जो बिग फाइव में पब्लिश हुए हैं, तो वो तो मस्ट रीड होती है। एग्जैक्टली। अच्छा, नूर, डू यू थिंक के जो पोइट्री जॉनरा है वो लिटरेचर में किसी हद तक कंट्रीब्यूट कर रहा है या करता है? इट्स अ बेस्ट वे टू एंगेज पीपल। I do believe so, because poetry I think is like the aesthetics of poetry are like more celebrated than others. I believe that because I myself do that. Because like मुझे choose करना क्या poetry करनी है, novel करना है, I'll just go straight to poetry, because like it's easier, और क्या कहते हैं, it's not just about easy, it's just that it has an aesthetic to it, it has that vibe to it that a lot of us connect with। और क्या कहते हैं, हर उसमें नॉवल इज लाइक अ लॉट मोर, उसको थोड़ा बड़ी होती है तो आपको टाइम लगता है उसके करने में, अंडरस्टैंड करने में, अपना कनेक्शन बिल्ड करने में। हाउएवर इन पोइट्री आप फर्स्ट लाइन से ही ना उसके दीवाने हो सकते हो। सो आई बिलीव दैट्स व्हाई आई ऑलवेज प्रेफर पोइट्री। और आई पास दिस क्वेश्चन टू फातिमा।
एग्जैक्टली आप एक छोटे से टाइम स्पैम में कुछ वर्ड्स के Yeah, साथ एक मैसेज डिलीवर भी कर सकते हो और आप बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी अपनी इमोशंस exactly. और कनेक्ट कर सकते हैं इट्स अ वेरी Hmm. गुड वे सो व्हाट डू यू थिंक फातिमा कि क्या पोइट्री जो है वो लिटरेचर इंडस्ट्री में कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है और इट्स अ गुड वे या बहुत ज्यादा लोग जो हैं हमारे यहाँ ये देखने के लिए जैसा रिसेंटली पाकिस्तान में फिर देखा जाए तो हम कुछ ज्यादा बुक्स जो है वो पोइट्री की जो है वो पब्लिश हो रही हैं एज कम्पेयर टू जो है फिक्शन नॉन फिक्शन और बायोग्राफीज लोग पोइट्री की बुक ज्यादा पब्लिश कर रहे हैं तो इन सब की वजूहत क्या आपको क्या लगता है व्हाट्स द रीजन बिहाइंड ऑल दिस पोइट्री की सबसे खूबसूरत बात ये है कि एक आप पोएम लिखते हो, वो उस एक पोएम की आपकी मीनिंग कुछ और होगी, मतलब आप किसी और कुछ एक्सपीरियंस करके या कुछ इमोशन को लेके आप वो पोएम लिखते हो और वो सेम एग्जैक्ट पोएम हर एक इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट मीनिंग कैरी करेगी। Hmm. हर एक इंडिविजुअल से ऑन अ डिफरेंट लेवल विद अ डिफरेंट मीनिंग कनेक्ट करेगा। दैट्स द ब्यूटी अबाउट पोइट्री। इसलिए पोइट्री इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, क्योंकि इतनी सी एक लाइन आपके लिए कुछ होगी और दूसरे के लिए कुछ होगी, तीसरे के लिए कुछ होगी। तो दैट्स व्हाई आई लव पोइट्री कि पोइट्री बाकी में सबसे अच्छी फॉर्म है लिटरेचर में। ओके सो हियर इज अ क्वेश्चन जो हम आप दोनों से जानना चाहते हैं कि बिकॉज वी नो कि हमारे पाकिस्तान में ट्रेडिशनल पब्लिशर ना सही लेकिन कुछ पब्लिशर्स जरूर हैं प्रिंट हाउसेस हैं जो आपकी बुक को सेल्फ पब्लिश या वैनिटी पब्लिश के लिए एक्सेप्ट करते हैं तो देन व्हाई यू चूज दास्तान आप लोगों ने दास्तान को क्यों चूज किया वेल फॉर मी, जब मैं अपनी फर्स्ट बुक पब्लिश करवाना चाह रही थी और मुझे था कि हाँ मुझे बस ये करना है, सो आई डिड सर्च अप अ लॉट ऑफ पीपल एंड व्हेन आई टॉक टू सर उमर, और जब मैंने उनसे बात की एंड द वे दैट देयर टीम द एंटायर टीम गाइडेड मी थ्रू द प्रोसेस, उन्होंने मेरे हर कंसर्न को सुना, उन्होंने मेरी हर जो मेरी क्वेरी थी उसको आंसर किया, और जो मेरी जो भी डर थे मेरे खौफ थे उन सबको समझाया कि हाँ ये किस तरह से होगा, ये क्या होगा। बिकॉज जब आप अपनी फर्स्ट बुक पब्लिश करा रहे होते ना, यू डोंट ऑलवेज वांट कि वो बेस्ट सेलर बने या इट मेक्स लॉट ऑफ मनी एंड स्टफ लाइक दैट, बट रादर यू लुक एट के समवन जो आपको गाइड करे इस पूरे प्रोसेस के थ्रू, आपकी फर्स्ट जर्नी को आपको गाइड करे। एंड फॉर मी दास्तान वाज इट, बिकॉज उन्होंने मेरी हर क्वेरी को समझा, उन्होंने मुझे बताया कि आप कहाँ पे क्या कर सकती हो, बिकॉज अगर मुझे था कि यार मुझे एक चीज में मुश्किल हो रही है ना, तो उन्होंने मेरे लिए दूसरा रास्ता बनाया, तो आई वाज लाइक एंड व्हेन आई टॉक टू देम आई वाज लाइक आई एम गोना डू इट विद देम। And a huge shout out to Sir Umar and my editor, Maliha Zafar. She's not a part of Daastan anymore, but she was a huge part of my project. और उन दोनों ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया पूरे प्रोसेस में, मैं उनको बहुत तंग किया, लेकिन they were very kind to me and they were very sweet. So I loved my entire journey with them. Thank you so much, Noor. Like yes, exactly. Umar sir is a blessing for Pakistan कि उन्होंने एक नया initiate लिया और now we are having so many writers and we can say that Pakistan भी literary के मामले में पीछे नहीं है जो कि हम Uh, अपना scope या हम अपनी पहचान जो है वो खो चुके थे because no one was accepting the new talent. So what exactly. about you, Fatima? आपने दास्तान को क्यों चूज सेम रीज़न, मैंने बहुत सारे सेल्फ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म से बात की थी, सबसे बात की, लेकिन जब मैंने उमर से बात की तो उन्होंने एक फ़ोन कॉल की थी। जब मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरा प्रोजेक्ट है, मेरी बुक है, मैं करना चाह रही हूँ, उन्होंने कहा हम कॉल अरेंज करते हैं। तो उन्होंने एक कॉल की थी और उस एक कॉल पे उन्होंने इतने आराम से, इतने प्यार से मुझे सब कुछ समझाया, सारी पूरी जर्नी, पूरा प्रोसेस, सब कुछ इतनी ईज़िली समझाया, मतलब सब कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ है ही नहीं। पहले मैं इतना Yeah. जितना तो उन्होंने ऐसा कर दिया कि कुछ भी नहीं है, इट्स ईज़ी, अ पीस ऑफ केक। तो उसके बाद फिर जब पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उन्होंने हर पॉइंट पे गाइड करके नहीं, आप यहाँ नहीं, आप यहाँ नहीं, ऐसे ये कर लें, आप ऐसे ये कर लें, बजट गाइडेंस, मार्केटिंग गाइडेंस, किस फॉर्मेटिंग गाइडेंस, हर चीज़ उन्होंने खुद पर्सनली चेक करी। मैं तो हर चीज़ के लिए उम्र पे ही मस्ती करती थी कि हर कुछ भी होता है मसला मैं उन्हीं को तंग करती थी और वो कभी भी अनॉय नहीं होते थे, हमेशा बहुत अच्छे से आंसर देते थे। तो उनकी वजह से सीरियसली जर्नी बहुत ईजी हो गई थी। तो दैट्स व्हाई इट वाज लाइक दास्तान से ही करना है। So, okay, guys. So, last question, but that's very much important because आप लोग ने एक पूरा सफर किया हुआ
और आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेहतर आइडिया है कि किस तरह से हम लेके चल सकते हैं। तो एक वुड यू लाइक टू सजेस्ट समथिंग कि जिस तरह से आप कह सके कि हम और किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं दास्तान को और हमारी पाकिस्तान की पब्लिशिंग इंडस्ट्री। आप दास्तान के लिए आई वुड नॉट से कि आप लोग को ज्यादा बदलें, बट आई वुड से कि आप लोग सेम रहें जैसे आप लोग हैं। बिकॉज ऑफ दैट के बिकॉज ऑफ द कंफर्ट यू गाइस ऑफर, आई बी कंप्लीटली ऑनेस्ट। आपको पता है, जब मैंने आप लोगों से बात की, आई वेंट टू नो अदर पब्लिशर। मुझे ठीक है, मुझे लगा कि शायद दास्तान की, आई बी ऑनेस्ट, मुझे शायद प्राइसेस हाई हो, बट फिर भी आई वेंट टू नो अदर। आई वाज लाइक मुझे यहीं से करवानी है। वाई? बिकॉज आई हैड दैट पीस ऑफ माइंड, and that was like the necessary thing, because I had worked with someone else earlier. अपनी कुछ anthology मैंने participate किया था, and I did not like my experience with them because they were too rude. I'll not take their name, but they were too rude. But I'll say कि आप लोग बस अपने जो इसका है कि आप लोग जो अपनी comfort offer करते हैं राइटर्स को, वो carry on करें। और suggestion I don't have as such. I would just say that हाँ, आप लोगों की वेबसाइट बहुत मुश्किल लगती है मुझे, उसको जरा सा आप लोग इजी कर दें। मेरे फ्रेंड्स को बहुत मसला होता है रिव्यूज लिखने में। All That right. is my suggestion. One noted thing, and we are currently working on that one too. So Yeah. thank you for your suggestion. What about you, Fatma? आप कोई एक या दो suggestions कुछ भी आप कहना चाहें कि जिससे आपको लगता है कि हमें ये चीज़ improve करनी चाहिए या इस तरह से हम और बेहतर कर सकते हैं? Well, Daastan is already a complete package. मुझे नहीं लगता उसको इतनी चेंजेस की ज़रूरत है, बल्कि उमर तो ऑब्वियसली हर वक्त कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं। हमारी डिस्कशन चलती रहती हैं, वो कुछ ना कुछ उनका रहता है कि ये इम्प्रूवमेंट करनी है, इम्प्रूवमेंट करनी है। लेकिन एक वही है ना, फ्रेंडशिप वाला माहौल है वहाँ पे, जो Hmm. कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है, वो भी कंटिन्यू रखें। एक वो सीरियस इन्वायरमेंट नहीं है दास्तान पे। आप राइटर्स को बहुत एज अ फ्रेंड बहुत काइंडली ट्रीट किया जाता है, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। सो आई डोंट थिंक दास्तान नीड्स टू चेंज, दास्तान शुड स्टे सेम। All right, thank you so much नूर एंड फातिमा, आप दोनों से बात करके और हमारे पोइट्री जॉनरा के बारे में सब कुछ जान के, आप लोगों की पब्लिशिंग इंडस्ट्री के बारे में जान के हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। So thank हमें you so आपसे much मिलके for बहुत once अच्छा again लगा। today. Okay, everyone, we will meet you next week with another episode with another genre. So stay tuned and keep watching Meri Daastan. Bye bye.